Good morning, everyone. Am I audible to you? My voice is clear. Voice clear आ रही है? Yes or no? यस मैम आ रही है. Fine. So, there is a mystery about the classical optimization techniques. We have already discussed simplex and two-phase problem and duality in the optimization techniques. Now, let's see about some classical optimization techniques. So, classical optimization, it means basically it refers to the optimization techniques which are useful in finding the optimum solution of continuous and the differentiable functions. Optimum solution means whether it may be maximum or minimum. So we have certain techniques over there, and in which we will study about the single variable optimization. Single variable optimization means wait a minute. Single variable optimization. It consists of a function which is of the form in one variable. So इसका मुझे चेक करना है whether this type of function will be optimized, means कहाँ पर maximize होगा, कहाँ पर minimize होगा. So this type of function can easily be graphed on a paper and we can check कि कैसे इसका maximization and minimization हम देख सकते हैं. Suppose इसको मुझे यहाँ पर चेक करना है और इस फंक्शन का जो ग्राफ प्लॉट होता है इट्स लाइक कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉटिंग हो रहा है. This is y-axis and x-axis here, and we have plotted the graph between these 2 points. So these are the points at which function will be either maximum or minimum. This is the, and this is B3. So you see that A1, A2, A3, these are the points at which the function is A1, A2, A3. इस पॉइंट पर क्या है, फंक्शन मेरा मैक्सिमम हो सकता है, which we call the relative maxima, and among these points we have a point which is the highest among them, so it will be called the global maximum.
In the same way, ये जो 3 points यहाँ पर हैं B1, B2 and B3, these points will be relative minima. And among these points, we have a point which will be global minima. So this is the concept of maxima, relative maxima and minima in case if a function is single variable and you just simply plot the function, the graph, and check whether the function at which points the function is relative maxima and at which point the function will be relative minima. So at B3, this is a global minima. And next thing we will study here about the multivariable functions that with no constants and with some inequalities and the constants. So this is about the single variable optimization, and later on we will see about multiple variable optimization. So we also have a very important theorem which is the necessary and the sufficient conditions for relative minima for a function of a single variable. So I'm going to write down, I'm not going in detail very much. I'm just going to share the necessary and sufficient conditions for finding the relative maxima and minima, and we will solve the problem based on this also. So you all are familiar with the maxima and minima functions in the differential calculus. तो उसमें हम क्या करते थे? Suppose hello. Yes. Yes, is there any issue? Saurabh Jain. Saurabh Jain, I'm talking to you. Are you here to create disturbance? Is this clear to you? Yes. Please let me know. If you want one-way communication, तो मैं videos को directly upload कर सकती हूँ. There is no need for the live classes. I'm not getting any response from your side. 23 participants are there, and still I'm asking. कुछ students बीच में disturbance create करते हैं, सिर्फ disturbance. Otherwise मैं पूछती हूँ, कोई response नहीं मिलता है in your class, especially. आज और ये स्क्रीन शेयर क्लियर नहीं आ रही है. तो यू मस्ट, आपको मैं आपसे बार बार पूछती हूँ, आपको उस चीज को बोलना चाहिए ना, अदरवाइज ये टोटली टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका भी और मेरा भी. आवाज क्लियर नहीं है, स्क्रीन क्लियर नहीं है, वट एवर द इश्यूज यू मस्ट शेयर. अगर मैं किसी चीज को आपसे पूछ रही हूँ, मेरे को तो पता नहीं चल पाएगा ना, आपको आप ही बता पाओगे आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो. मेरी तरफ से एवरीथिंग इज ओके हियर. Is the problem screen problem and the voice is आप सबके साथ आ रहा है या ठीक आ रहा है? Again, no response.
anyways, I'm going to continue. And if you face any issue, just watch the video. So I will upload all the videos on the YouTube, and you can check the videos from there. So next thing is necessary and the sufficient conditions for the relative minimum for a function of a single variable. So theorem here is for the necessary conditions. And it states that if a function f of x, if a function f of x is defined in the interval ये मैं पापा को फोन लग गया क्या मैंने पापा को मैं वापस ट्राई कर देता अगर ऑन रहता on mic. करो डाउन If a function f of x is defined in the interval which lies between a and b and has a relative minimum at and has a relative minimum at x equals to x star, where this particular value lies between x star lies between a and b. And another point is if the derivative of the function, which is f dash of x, if the derivative means df of x by dx or f dash of x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, it exists as a finite number at x equals to x star, then f dash of x star will be 0. So this is the necessary condition, means if this is hold, कोई function है which is defined over the interval a b and it has a relative minimum value at x equals to x star, and if its derivative exists, the finite number, then f dash of x star will be 0. So we also have the sufficient conditions here, और if it equates to 0, इसको equate to 0 करने के बाद जो भी point होगा, in general the point at x star, it will be known as the stationary points. जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, जब हम मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास फंक्शन गिवन होता है, और इसको मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू फॉर द डेरिवेटिव, इक्वेट इट टू 0, और इन पॉइंट्स को बोला जाता है, इससे जो पॉइंट्स निकल कर आते हैं, stationary points, and then we evaluate its second derivative. If it's greater than 0, then the function is a minimum, and if it's less than 0, then function will be maximum. So this is the general concept in the differential calculus. आपने already study करा है. Now we are going to check where the function will be a relative minimum and the relative maximum. So this is the necessary condition for a function to be relative minimum. Now next theorem we will check which is the sufficient condition. So now the theorem states that sufficient conditions. Listen very carefully. The problems will be based on these conditions. So sufficient conditions here
we have a function f of x, and x star obviously lies between a and b. So we have taken here f dash of x star, f double dash of x star, and f n minus 1 of x star. All these derivatives are 0, but f n of x star is not equals to 0. मीन्स मेरे पास कोई भी फंक्शन गिवन है, मैं उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालती हूँ, सेकंड डेरिवेटिव वैल्यूएट करती हूँ, थर्ड डेरिवेटिव, नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स आई एम गोइंग टू इवैल्यूएट. सपोज थर्ड तक 0 आ जाता है और फोर्थ 0 नहीं आता. So this is in this sufficient condition we state that the first derivative, second derivative, and among the n derivatives, n minus 1th derivatives are 0, but nth derivative is not equals to 0. Then f x star या तो ये मिनिमम होगा, या तो मैक्सिमम होगा, या फिर ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा. यही तीन कंडीशंस यहाँ पे अराइज हो सकती हैं. सो वी हैव 3 कंडीशंस ओवर देयर. मिनिमम होगा when n is even. Minimum, it gives a minimum value. Of f of x. If n is even, and fn of, this is the same condition as you have studied in the differential calculus कि maximum कब होता था, when maximum when less than 0 and minimum when greater than 0. So minimum when fn of x star is greater than 0. Only we have to check कि कितने number of derivatives यहाँ पर 0 हैं. अगर मेरे पास 4 derivatives मतलब first, second, third and fourth means n is even here and this condition holds, then function gives a minimum value of f of x. In the same way, it gives a maximum value of f of x if n is odd, and the derivative is, this will be less than 0. अदरवाइज अगर n की वैल्यू ऑड आ जाती है, मतलब कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव या फिफ्थ डेरिवेटिव तक सब 0 हो जाता है, n is odd, then the function is neither maximum nor a minimum. So if n is odd, then f of x is neither maximum nor minimum. So this theorem states the sufficient condition for a function to be maxima or minima. So function, the condition here is the function must be a single variable. This applicable only when the function is of single variable. So if n is in the last point, if n is odd, then we say that x star is neither maximum nor minimum. In this case, it gives a point of inflection. इस वाले केस में जो values होती हैं, that are the point of inflection. So I'm going to take a problem based on the single variable optimization here. The conditions are clear to you? Is the conditions are clear? Yes, ma'am. Okay. Please do write attendance, present in the chat box. Those students are present, please do write your name. No, sorry, present. Expo. So now the question is, determine the maximum and minimum
values of the function, and function here is x raised to the power 5 minus 5x raised to the power 4. So this is a single variable function, and you can check the sufficient conditions here. मतलब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट्स इवेल्युएट करूँगी, बिकॉज हमें यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज इवेल्युएट करनी है. So in order to evaluate the stationary points, find out its derivative. मैम चैट डिसेबल्ड आ रहा है. Now I have changed the settings. Now you can write. So in order to find out the stationary points, find out its derivative, equate it to 0, और उसको equate 0 करने के बाद जो भी points होते हैं उसको stationary points बोलते हैं. And then I am going to find out the derivatives at each point. I am going to check कि particular point पे मेरे जो derivatives हैं, whether first derivative, second derivative, and all the derivatives are 0 or not. So do remember the sufficient conditions for finding the maxima and minima. तो इसको देखो कैसे करना है. फंक्शन जो यहाँ पर दे रखा है मुझे, this is the given function. And इसका जो डेरिवेटिव होगा 5x raised to the power 4 minus 20x cube plus 15x square. You can take 5x square common from this, and the remaining values are x square minus 4x plus 3. So it becomes, इसके जो factors होंगे, these are minus 3 minus 1, so x minus 3 and x minus 1. This is the value of my derivative. Now equate it to 0. So we have 3 stationary points here, 5x cube, x minus 3, x minus 1 equals to 0. This implies 0, 1 and 3. Now we have to evaluate the value. We have to check कि किस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो रिलेटिव मैक्सिमा है या रिलेटिव मिनिमा है. सबसे पहले मैं जो ले रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेक एट x इक्वल्स टू 1. At x equals to 1. So evaluating its second derivative, इसका जो second derivative होगा वो क्या होगा, 20 x cube minus this is from this equation, it's 60 x square plus 30x. So we can take tan x common. अंदर जो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म्स हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3. सो एट x इक्वल्स टू 1, इट्स सेकेंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है, इट्स 10 2 minus 6 plus 3, and it's equals to, is it positive or negative? It's negative, minus 10, which is less than 0. तो इस हमारे पास जो सेकेंड डेरिवेटिव आ गया है वो कितना आ गया है, लेस देन 0. तो फंक्शन यहाँ पर कैसा होगा, फंक्शन विल बी रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम. इट विल बी रिलेटिव मैक्सिमम फंक्शन.
Now I'm going to check at 3 and then 0. At x equals to 3, सेकेंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है 3 पर, तो यहाँ से देख लो आप, ये सेकेंड डेरिवेटिव हमने इवैल्यूएट करा था, जो इसकी वैल्यू होगी इट्स 30, दिस विल बी 3, so it's 18 minus 18 plus 3, so I'm getting the positive value here. So we say that x equals to 3 is a minimum value, which is the relative minimum. आप यहाँ से फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी इवैल्यूएट कर सकते हो, f मैक्सिमम एट 1, विच इज f ऑफ x इक्वल्स टू 1. तो जो गिवन फंक्शन था उसमें मैं 1 सब्सटीट्यूट कर दूंगी, और गिवन फंक्शन मेरे पास क्या है यहाँ पर, गिवन फंक्शन ये है, इसमें मैंने अगर 1 सब्सटीट्यूट कर दिया तो आई एम गेटिंग 0. तो जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है इट्स 0. This is 0. In the same way, we can evaluate the minimum value at 3, which is f minimum, means value of the function at 3, and you will get function जो है मेरे पास it's x raised to the power 5 minus 5x4 plus 5x cube minus 1. So substitute 3 in there. We will get, this is 243 minus 405 plus 105 minus 1. And we will get minus 28 here. So this is maximum value, minimum at 3. Now at last, we are going to check the value at x equals to 0. ये 3 हमारे जो स्टेशनरी पॉइंट्स आए थे उन्हीं पर हम चेक कर रहे हैं, 0, 1 and 3. So 0 पर चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे. f डबल डैश की वैल्यू 0 पर कितनी आ रही है. सो दिस इज 0, 0 and 0. आई एम गेटिंग सेकेंड डेरिवेटिव इक्वेटेड टू 0. So we need to evaluate its next derivative as the condition for the sufficient conditions में जो मैंने आपको बताया था, अगर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाती है तो मुझे उसके आगे के डेरिवेटिव्स इवैल्यूएट करने होंगे एंड चेक कि कहाँ तक के डेरिवेटिव 0 आते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द n. अगर मेरे पास जो n है मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव तक 0 आ जाता है तो फंक्शन मेरे पास इवन है तो मिनिमम हो जाएगा, और अगर ऑड आता है तो मैक्सिमम हो जाएगा. ऑड पे नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम. तो सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ 0 आ गया. नाउ फाइंड आउट इट्स थर्ड डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश ऑफ x. So it's 60x square minus 120x plus 30, and the value of derivative at x equals to 0. At x equals to 0, you see that the third derivative is 30. Now we have n is odd here, so function is neither maximum nor minimum. अगर n even होता तो ही मैक्सिमा या मिनिमा डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज द थर्ड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0 अप टू सेकेंड आर 0. सो फंक्शन हियर इज, and you write it like x equals to 0 is neither maximum nor minimum point. So this is the concept of
relative maxima and the minima in case of single variable optimization. We will study about the multi-variable functions, and we have two conditions here: multi-variable function with no constants and multi-variable functions with constants and inequalities. So I'm going to take one more problem here, which is this clear to you? Problem clear hai? Yes, ma'am. Another question here is, that x upon 1 plus x tan x is maximum when x is given by the equation x equals to cos x. So this is you see that यहाँ पर हमारे पास एक ही variable है. So this is single variable optimization here. Function यहाँ पर दे रखा है मुझे. The given function here is x upon 1 plus x tan x. Procedure is again same. सबसे पहले यहाँ पर मुझे check करना है x जब cos x है तो we have to show that the function is maximum. तो evaluate करना है its derivative. Apply the quotient rule here. सबको आता है इसको derivative करना. So this is 1 plus x tan x multiplication with 1 minus x, and it's इसका जो integral होगा it will be, this is 0 x sec square x plus tan x. And after evaluating we will get x tan x cancel हो जाएगा, and the remaining term will be 1 minus x square sec square x divided by 1 plus x tan x square. So f dash of x equated to 0. This implies that 1 minus x square sec square x equals to 0 or x square equals to cos square x. This implies x equals to cos x. Now check its second derivative at cos x. Second derivative की value cos x पे अगर less than 0 आ जाती है, then this function will gives the minimum value. I'm going to evaluate its second derivative. इसका जो second derivative होगा, just try to solve it yourself. It's sort of some इसमें वापस से मुझे क्वेश्चन टूल अप्लाई करना होगा. तो इसमें 1 plus x tan x raised to the power 4 हो जाएगा. 1 plus x tan x square, and it's like apply the product rule here. So it's minus 2x sec square x minus x square 2 sec x. Sec x तो क्या होगा? Sec x tan x. After that minus 1 minus x square sec square x, and then
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आएगा 2 1 प्लस एक्स 10x एंड देन x 10x को और डिफ्रेंशिएट करना है, तो इट्स 10x प्लस x 10 का प्लस x स्क्वायर x. इवेल्युएट इट्स वैल्यू एट cos x. इस पर आप cos x पर रखकर देख लो. The value of the second derivative at cos x at x equals to cos x, you will get the negative value here, which must be less than 0. So we say that this function is maximum at x equals to, for which the x is cos x. Therefore, function has a maximum for which x equals to cos x. This is what we have to prove in this problem. So in the next lecture, we will study about the multivariable optimization with constants and without constants. We have to study the two cases there. So any problem in the single variable? Is clear to everyone? Yes, clear or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. So the next class will be on. आपका कल फ्री होता है क्या? Let me know your free time schedule of tomorrow. अगर कल की कोई क्लास फ्री होती है, कल थोड़ा मॉर्निंग में ले सकते हैं क्लास. ठीक है? कल मेरे की क्लासेस होती है तो Your voice is not clear. ऐसे ही है. मेरे को मैसेज मेरे की क्लास दिन में ओके. आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. So do message me your free time slot of tomorrow. Okay? Any other problem? Okay. ठीक है, नो इश्यूज. नहीं, नून में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कल, और मॉर्निंग में मैं ले सकती थी, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम फिर कब होता है. ओके, ये साथ चल रहा है प्रॉब्लम. ओके फाइन.